Assalamualaikum. Hello and welcome back to CA Circuit. Well, I hope you all are taking good care of your health. This video is about Computer Science grade ninth, and here we are discussing lecture notes part 1 of unit number 6, that is impacts of computing. Alright, so if you find this video helpful, then do not forget to like, share and subscribe as well. And if you have any queries or any suggestions, then you can do let me know in comments, okay? So let's start with safe and responsible use of computer. Basically, unit number 6 is impacts of computing. In this we will discuss safe and responsible use of computer hardware, computer software, how we can use them responsibly. Alright, so यहाँ पे कुछ important questions को consider किया गया है हर एक टॉपिक के साथ, ताकि इसकी जो टॉपिक है उसकी मज़ीद क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो सके, ठीक है, और आपको समझ आ सके कि लाइक किस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस टाइप के लाइक उसमें से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज़ व्हाट इज़ सेफ कंप्यूटर यूज़। यानी कि सेफ़ और रिस्पॉन्सिबल कंप्यूटर यूज़ की अगर हम बात करें, सो बेसिकली इट मीन्स प्रोटेक्टिंग और सेल्फ और डिवाइसेस एंड आवर डेटा ऑनलाइन एंड ऑलवेज। इसको किस तरह से किया जा सकता है, अपने आप को सेफली, अपने सिस्टम को सेफली, अपने डेटा को किस तरह से सेफ यूज़ किया जा सकता है रिस्पॉन्सिबल वे में। लाइक आप जो है वो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स का यूज़ करें, ठीक है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करें टू प्रिवेंट हैकिंग और malware, use secure Wi-Fi connections and adjust privacy settings to control who can access your information. Next question is, how can we stay safe online? अब ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट, लाइक अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो उसमें है, ठीक है। यानी कि आजकल हम अगर देखें तो सभी हम जो है वो सोशल नेटवर्किंग को बहुत ज़्यादा जो है वो उसका हमारी लाइफ में यूज़ है। उसके अलावा अगर हम ई कॉमर्स की बात करें तो बेसिकली हम किस तरह से सेफ रह सकते हैं, हम डिफरेंट मेजर्स जो कि ज़रूरी हैं। लाइक अगर हम ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हैं तो उसमें जो इन्फॉर्मेशन अननेसेसरी है उस शॉपिंग से रिलेटेड, उस प्रोडक्ट की जो है वो, अगर हम कोई भी प्रोडक्ट परचेज़ कर रहे हैं उसकी डिटेल्स में हमें सिर्फ रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को ऐड करना होता है। आप कोई इरेलीवेंट अननेसेसरी डिटेल्स तो नहीं ऐड कर सकते ना। That is basically irrelevant and unnecessary details, okay, and we can stay safe by not sharing our personal information, avoiding suspicious links and using strong passwords, okay. Avoid using public Wi-Fi for sensitive tasks like online shopping or banking, and ensure websites are secure like HTTPS. अच्छा, उससे जो पब्लिक वाईफाई कनेक्शंस हैं या किसी का हॉटस्पॉट लेके कोई आप इम्पोर्टेंट ट्रांजैक्शन या कोई इस तरह की चीज़ नहीं करें, और वही जो है वो वेबसाइट्स को आप जो है वो यूज़ करें जो अथेंटिक हों, ठीक है, जिनमें कोई प्रोटोकॉल स्पेसिफाई हो, सही है। Alright, so next question is, what is responsible computer use? Basically, responsible use of computer means use computers ethically, such as not bullying, copying content or hacking. यानी कि आप किसी को जो है वो harass ना करें, किसी को threatening emails ना भेजें, या किसी का जो content है या जो कोई किसी की कोई भी information है, चाहे वो sensitive है या नहीं है, आप उसको जो है वो मिसयूज़ ना करें। अव्वल तो उसको यूज़ ही ना करें, तो ना ही किसी की इन्फॉर्मेशन को जो है वो किसी ऐसे मीन से अपने पर्सनल बेनिफिट्स की गर्ज से यूज़ करें, ठीक है, एंड नॉट फॉर हैकिंग। वाई इज़ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इम्पॉर्टेंट? Obviously, it helps protect our computer from harmful viruses and malware. We can protect our devices by updating software regularly and not downloading from unknown sources. We can keep our devices secure, okay? The next topic is safe and responsible use of computer hardware. How to increase lifespan of hardware. Using computer hardware safely and responsibly means taking care of devices and use them wisely. It involves handling devices carefully, keeping them clean and storing them properly. यानी कि आप उनको किसी ऐसी जगह पे तो नहीं रख रहे कि जहाँ पे आपके जो है वो खाने पीने के आइटम्स भी मौजूद हैं, वहीं पे आप जो है अपना ब्रेकफास्ट कर रहे हैं या लंच कर रहे हैं, या फिर आपने उनको बहुत ज़्यादा डस्ट में कहीं पे स्टोर कर दिया। Basically, regular cleaning and checking hardware prevents damage, it increases its lifespan, okay. What is the role of security in hardware use? Protect hardware with strong passwords and avoid using unknown USBs to prevent data theft.
एंड अवॉइड यूजिंग पब्लिक वाईफाई। यूएसबीज तो वैसे भी जो है वो बहुत ही, एक हम कह सकते हैं कि उसमें अक्सर जो एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में तो वायरसेस बहुत ज़्यादा अटैक करते हैं यूएसबीज के थ्रू, ठीक है। पब्लिक वाईफाई को भी जो है वो यूज़ करना अवॉइड करें। अपनी कोई स्पेशल जो काम होते हैं, सेंसिटिव काम, जैसे कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शंस ऑफ मनी, ओके। Next question is, why should we upgrade hardware responsibly? Sensible upgrades improve performance without wasting resources. By following this, we can keep hardware safe, secure, and long lasting as well. Okay. What is ethical hardware use? It means respecting others' devices and not damaging or misusing them. Do not steal someone else's information or try to alter that for personal benefits. अब देखें एथिकल बिहेवियर हार्डवेयर यूज़ में किस तरह से है कि लाइक आप किसी की डिवाइस को, किसी के सिस्टम को डैमेज तो नहीं कर रहे, या आप किसी का जो पर्सनल डेटा है या जो भी डेटा है आप उसको मिसयूज़ तो नहीं कर रहे अपने पर्सनल बेनिफिट्स के लिए, ठीक है। Alright, then here next topic is safe and responsible use of computer software. Basically, using software safely and responsibly means protecting your data and following ethical guidelines. सो बेसिकली व्हाट इज़ सेफ़ सॉफ्टवेयर यूज़। अब सेफ़ सॉफ्टवेयर यूज़ क्या है, यानी कि आप अपने सिस्टम में जो एप्लीकेशंस इंस्टॉल कर रहे हैं क्या वो ऑफिशियल सोर्सेज से कर रहे हैं, यानी कि आप इफ़ यू आर डाउनलोडिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस फ्रॉम इट्स ऑफिशियल वेबसाइट इंस्टेड ऑफ पायरेटेड वर्जन्स, ओके। व्हाई आर सॉफ्टवेयर अपडेट्स इम्पॉर्टेंट? बेसिकली जो अपडेट्स होती हैं दे फिक्स bugs or errors that helps to run our system smoothly and improve security, like updating your web browser to avoid hacking risk, okay. Next question is, what is the role of antivirus software? Antivirus programs like yours and Norton protect your system from uh, malware. What is ethical software use? Basically, it means using licensed software such as purchasing Adobe Photoshop instead of using cracked versions. यानी कि अगर आप जो सॉफ्टवेयर है उनका क्रैक्ड वर्जन यूज़ करें, दैट इज़ नॉट एथिकली ethical software use, okay. How can privacy be protected? Adjusting settings like disabling location access in social media apps, prevent unnecessary data sharing, avoid sharing your personal details on social media. अब देखें हमारी प्राइवेसी भी बेसिकली हमारे हाथों में ही है, ठीक है। जितना हम ओवर शेयर करेंगे हमारी अननेसेसरी पर्सनल डिटेल्स को, देन ऑब्वियसली हम अपना डेटा खुद ही पब्लिक कर रहे हैं, ठीक है। लाइक ऑनलाइन शॉपिंग की बात करें, या अगर हम कोई ऐसी जो है वो हम डेटा हमारा जो सोशल मीडिया एप्लीकेशंस पे हम अननेसेसरी डिटेल्स को हर वक्त जो है वो हम लोकेशन शेयर कर रहे हैं, कौन सी हम एक्टिविटी परफॉर्म करें, सब चीज़ें अगर हम शेयर करते हैं, सो बेसिकली हम खुद ही अपनी प्राइवेसी को पब्लिक कर रहे होते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ नॉट एथिकली गुड बिहेवियर फॉर योर प्राइवेसी, ओके। Alright, so that was all about chapter number 6, lecture notes part 1. And if you have any ambiguities or any suggestions, then you can do let me know in comments, okay. Do not forget to like, share and subscribe as well. Allah Hafiz.